इधर मेरे पास अपना बड़ा पॉट है और इसमें अपना हम बेसन, हल्दी, योगर्ट, दही और पानी जो आधा लीटर वाला पानी है वो मिक्स करेंगे. Over here I have my gram flour, yogurt, water and turmeric. We're going to be adding the half liter of water right now and then we're just going to mix this and set this aside. फिर हम इसको मिक्स करके अभी साइड में रख रहे हैं. Here I have another pot over medium low heat and we're going to add in our oil. इधर मेरे पास एक और pot है और medium low heat पे मैं अपना तेल इसमें डाल रही हूँ. The ginger and garlic और फिर लहसुन अदरक भी हम इसमें डाल रहे हैं. And then we are just going to mix this. फिर हम इसको mix करेंगे और ये that's the ginger. वो अभी हमने अदरक डाले अंदर. Be careful at this time, just like move back. And then we're going to add in our liquid mixture that we just mixed. फिर जो अभी हमने liquid mixture mix किया था हम उसमें वो डाल रहे हैं अभी. Then we're going to add in the salt. फिर हम नमक और Zeera powder इसमें डाल रहे हैं and the cumin powder. And then just mix this. Once our curry is coming to a boil, we're going to add the 1 liter of water in. जब हमारा curry boil पे आ रहा है हम इसमें 1 लीटर पानी डाल के mix करेंगे and then we're going to mix it. Now it's time for our coconut milk. अब हम इसमें अपना 1 कप coconut milk डालेंगे और इसको mix कर देंगे and then we're just going to mix this. Now we're going to bring our curry to a boil. अब हम अपने curry को boil पे ला रहे हैं. For the assembling, अब हम assemble करेंगे. मेरे पास इधर boiled spaghetti है और कोई भी आप marinated chicken use कर सकते हैं. Over here I have some boiled spaghetti and you can use any marinated chicken that you have. And on top of this we are going to pour our curry that we've made. इसके ऊपर हम अपना curry pour करेंगे and we are going to top it off with the garnish और फिर हम इसको ऊपर से garnish के साथ top करेंगे. For the garnish we have ginger. हमारे पास garnish के लिए ginger है and slims और slims भी है हमारे पास and green chilies and coriander and we also have और हमारे पास हरा धनिया भी है और हरी मिर्च. And then once that all is done, our Khao Suey is ready. फिर जब ये सब कुछ हमारा हो जाएगा हमारा Khao Suey तैयार हो जाएगा. और अगर आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगे मुझे नीचे कमेंट्स बताएं. इस वीडियो को बिग थम्स अप दें. आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें. मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक और ट्विटर पर फॉलो करें. Bye. Our Khao Suey is ready and it looks amazing. If you guys like this recipe, tell me in the comments down below and give this video a big thumbs up. Please like, subscribe and share my videos and go follow me on Instagram, Facebook, TikTok and Twitter. Bye.